हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। आज हम वीडियो में अबॉर्शन का लेसन प्लान लर्न करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट लेसन प्लान एंड थ्रू दिस वीडियो you learn this lesson plan very easily, and this video helps you to write the lesson plan in assignment work purpose। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन प्लान ऑन अबॉर्शन। लेसन प्लान में सबसे पहले हम फ्रंट पेज तैयार करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर कॉलेज का नाम, द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अबॉर्शन, लेसन प्लान और अबॉर्शन सबमिटेड टू मीन्स जिस टीचर को हम लेसन प्लान सबमिट करना है, और सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन मीन्स जिस डेट को हम लेसन प्लान को प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रंट या कवरिंग पेज तैयार करते हैं लेसन प्लान का। आइए देखते हैं इसको बड़ा करके। सबसे ऊपर कॉलेज का नाम लिखना है। द नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, इस तरह से। नेक्स्ट लेसन प्लान देखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं लेसन प्लान में आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में सबसे फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ टॉपिक, ग्रुप मीन्स किस क्लास में हम लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, साइज ऑफ ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, सब्जेक्ट, टाइम, ड्यूरेशन, डेट, वेन्यू मीन्स कहाँ पर हम लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास रूम, ऑडिटोरियम, इस तरह से। मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर कम डिस्कशन, एवीएट्स में OHP, PPT, ब्लैक बोर्ड, इस तरह से हमको यहाँ पर ये सारा आइडेंटिफिकेशन डाटा में लिखना है। नेक्स्ट प्रीवियस नॉलेज, टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट अबाउट द अबॉर्शन। अबॉर्शन के बारे में हमको स्टूडेंट से पूछना है कि वो क्या जानते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज ऑफ अबॉर्शन। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखना है, एट द एंड ऑफ टीचिंग द ग्रुप इज एबल टू एक्सप्लेन अबॉर्शन, टू डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, to explain out the causes and risk factor of abortion, to enlist the sign and symptom of abortion, to explain the diagnostic test of the abortion, to describe about the medical and surgical management of abortion, and to describe about the nursing management of abortion. These are some specific content of this lesson plan. स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ एक फॉर्मेट तैयार करते हैं लेसन प्लान का। ये होगा लेसन प्लान का फॉर्मेट, जिसमें सबसे टॉप पे फर्स्ट सीरियल नंबर, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टाइम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एवेट्स एंड एवेल्यूशन। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर फॉर्मेट में तैयार करना है। सीरियल नंबर फर्स्ट में स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा टू मेक अटेंशन ऑफ ग्रुप मीन्स हमको क्लास का अटेंशन करना है। इस टाइम 1 मिनट का होगा। कंटेंट में अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक मीन्स जो हमारा टॉपिक है उसको अनाउंस करना है, जिससे कि स्टूडेंट अपना अटेंशन क्लियर करें। तो इसमें लिखना है टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट अबॉर्शन और मिसकैरेज। नंबर सेकंड में इंट्रोडक्शन द टॉपिक विद ग्रुप, टाइम 1 मिनट का। इंट्रोडक्शन टू टॉपिक मीन्स जो हमारा टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करना है। अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय removal or expulsion of any embryo or fetus, and abortion that occur without intervention is known as the miscarriage or spontaneous abortion. These occur in approximately 30 to 40% of pregnancies. टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन लिखना है। नंबर थर्ड में टू डिफाइन अबॉर्शन, अबॉर्शन को डिफाइन करना है। डेफिनेशन लिखना है यहाँ पर अबॉर्शन का। टाइम 4 मिनट का होगा। Abortion is a medical term for the disruption of a pregnancy before the fetus reaches its viable age of more than 20 to 24 weeks of gestation or weight at least 500 gram. And abortion is the termination of pregnancy by the removal or expulsion from the uterus of a fetus or embryo, resulting in or caused by its death. Next, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में भी हमको यहाँ पर लेक्चर कम डिस्कशन लिखना है।
और एविएट्स में वर्बलाइज हम जनरली बोल कर बताएंगे। एवेल्यूशन में हमको लिखना है पर डिफाइन अबॉर्शन। नंबर 4 में टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, टाइम ड्यूरेशन होगा 8 मिनट का। कंटेंट होगा टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन, और एविएट्स में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ हम टाइप्स को यहाँ प्रेजेंट करेंगे। और एवेल्यूशन में लिखना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन में देखते हैं कंटेंट में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। This is when a pregnancy and without medical interventions. It's another term for a miscarriage, abortion, termination of pregnancy before the fetus is sufficient developed to survive before 24 weeks. Spontaneous abortion, further classified as threatened abortion. Spontaneous के further जो types में उसमें first threatened abortion. The embryo is already viable, the products of conception are still intact, and the cervix is closed, but there is vaginal bleeding present. Next, inevitable imminent abortion. The embryo is dead with products of conception either intact or expelled. The cervix is already dilated, and there is presence of vaginal bleeding. Complete abortion. All product of conception are expelled and the embryo is dead, the cervix is dilated, and there is a mild bleeding. Incomplete abortion, the embryo is dead but some product of conception are still intact, the cervix is already dilated, and there is severe vaginal bleeding. Next, missed abortion, the embryo is already dead while inside the uterus the product of conception are still intact and the cervix is closed. There are brown vaginal discharge present. Recurrent habitual abortion. Abortion become recurrent once the woman has had 3 consecutive miscarriages at the same gestational age. Septic abortion. Abortion with clinical evidence of infection of uterus or its content. Next, with a spontaneous abortion. Next, induced abortion. It's the use of medical procedure or medication to intentionally end a pregnancy. Other terms are elective abortion, termination of pregnancy, or therapeutic abortion, if performed to preserve the health of the mother. These are the types of abortion. Next, देखते हैं नंबर 5 to explain about the causes of abortion. टाइम 5 मिनट का होगा। कंटेंट में लिखना है causes। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन, L/D मीन्स लेक्चर कम डिस्कशन। एविएट्स में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एवेल्यूशन में व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अबॉर्शन। इस तरह से हमको लिखना है। कॉजेज में अबॉर्शन में भी अकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज फीटल, प्लेसेंटल और मैटरनल। डिफरेंट कॉजेज में फर्स्ट देखते हैं फीटल कॉज। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज द abnormal development of the zygote, embryo or fetus. These abnormalities are incompatible with the life and would have resulted in severe congenital abnormal anomalies had pregnancy not been aborted spontaneously. Next, maternal factor. These are congenital or acquired conditions of the mother and environmental factors that had adversely affected pregnancy outcome and lead to abortion. Such conditions include diabetes mellitus, incomplete cervix, exposure to radiation and infection. Placental factors usually cause abortion around the 14th week of gestation. These factors include premature separation of the normally implanted placenta and abnormal placental implantation. Next, number 6 देखते हैं। To explain risk factor of abortion, टाइम 5 मिनट का होगा। रिस्क फैक्टर कंटेंट होगा यहाँ पर, और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होगा लेक्चर कम डिस्कशन, एविएट्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे, और इवेल्यूशन को व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर अबॉर्शन। तो देखते हैं रिस्क फैक्टर में। रिस्क फैक्टर दैट कंसर्न अबॉर्शन, congenital structural defect. This structural defect may be due to chromosomal aberrations or serious physical defect.
Next, low progesterone. Low progesterone maintain residual vessels. If the corpus luteum failed to produce enough progesterone, it would risk the life of the fetus inside the uterus. RS incompatibility, the fetus could get rejected from a mother's body if they have an incompatible RH. Undernutrition, lack of nutrients would cause undernourishment to both the mother and the fetus, leading to abortion. Drugs, there are drugs which are contraindicated for pregnant women. Ingestion might compromise the fetus and lead to abortion. Next, infection. In infection, the fetus would fail to grow and estrogen and progesterone production would fall. This would lead to endometrial surging. Then prostaglandin would be released, leading to uterine contraction and cervical dilation along with expulsion of the product of pregnancy. Next, serial number होगा 7. स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा टू एनालिस द साइन सिम्टम ऑफ अबॉर्शन. टाइम 5 मिनट का. कंटेंट साइन एंड सिम्टम्स, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, लेक्चर कम डिस्कशन. एविएट्स होगा ओवरऑल प्रोजेक्टर इवेल्यूशन. व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ अबॉर्शन. साइन सिम्टम में देखते हैं पर द साइन एंड सिम्टम ऑफ अबॉर्शन मस्ट बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट बिफोर ruling out any other relative causes. Vaginal spotting. Here, vaginal spotting appear as small brownish to reddish spot of blood coming out of the woman vaginal opening. This usually occur when the cervix slightly dilates because the woman may have tried to lift heavy object or mild trauma to the abdomen occurred. Next, vaginal bleeding. Bleeding is a serious occurrence during pregnancy because it might indicate that the cervix has opened and product of conception might be expelled. Cramping, sharp dull pain. In the symphysis pubis, this could occur on both sides and could be caused by trauma or premature contractions that might cause cervical dilation. Uterine contraction felt by mother. Uterine contractions can be false or true, but either of the two could be alarming during the early stage of pregnancy because it could expel the content of the uterus, thereby leading to abortion. Next, content में to explain the diagnostic test for abortion. टाइम 4 मिनट का होगा. डायग्नोस्टिक टेस्ट रिलेटेड अबॉर्शन. यहाँ पर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को लेक्चर कम डिस्कशन. एविएट्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एवेल्यूशन. व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अबॉर्शन. डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखते हैं सबसे फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट. दिस इज टू कन्फर्म द प्रेगनेंसी. First, if vaginal bleeding occur, if tests turn out negative, then the woman would be subjected to other diagnostic tests that could confirm the nature and cause of vaginal bleeding. If it is positive, then abortion would be considered and it would be classified according to the presenting sign symptoms. Ultrasound, the safest and confirmatory test for pregnancy. The ultrasound would be able to confirm if the pregnancy is positive and also confirm if the product of conception are still intact. Next देखते हैं 9. To discuss about the management of abortion. Here time 5 मिनट का होगा. कंटेंट में मैनेजमेंट जिसमें मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे. टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी लेक्चर कम discussion aviates overall project or evaluation. What are the medical and surgical management for abortion. Management में देखते हैं medical management, administration of the intravenous fluid such as lactate ringers, IV therapy, administration of the oxygen regulated at 6 to 10 liter per minute by face masks to replace intravascular fluid loss and provide adequate fetal oxygenation. Avoid vaginal examination to avoid disturbing the product of conception or triggering cervical dilation. Ultrasound examination to more information about the fetal and also maternal well-being. Surgical management, dilation and evacuation. This is to make sure that
all product of conception would be removed from the uterus. Dilation and curettage, this is the most commonly performed for incomplete abortion to remove the remainder of the product of conception from the uterus. नेक्स्ट नंबर 10 पे देखते हैं. टू डिस्क्राइब अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अबॉर्शन, टाइम 5 मिनट का होगा. कंटेंट होगा नर्सिंग इंटरवेंशंस, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी लाइक सरकम डिस्कशन. और एविएट्स ओवरहेड प्रोजेक्टर एवेल्यूशन में डिस्क्राइब द नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर अबॉर्शन. यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं. यहाँ पर द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ एन अबॉर्शन इज ऑलवेज विजिनल स्पॉटिंग. नर्स नोटिस द सिम्टम्स. Nurse always receive the initial information, so should be aware of the guideline in assessing bleeding during pregnancy. Ask of the pregnant woman's action before spotting or bleeding occurred and identifies the measures she did when she first noticed the bleeding. Inquire of the duration and intensity of the bleeding or pain felt. Lastly, identify the client's blood type for cases of RS incompatibility. If bleeding is profuse, place woman flat in bed on her side and monitor uterine contractions and fetal heart rate through an external monitor. Also measure intake and output to establish renal function and assess the woman's vital sign to establish maternal response to blood loss. Next, measure the maternal blood loss by saving and weighing the used pad. Next, save any tissue found in the pads because this might be part of the product of conception. नेक्स्ट नंबर 11 देखते हैं. यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू कंक्लूड टॉपिक, टाइम 1 मिनट का होगा. कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पर. Abortion is when pregnancy is ended so that it doesn't result in the birth of a child. Miscarriage is the most common type of pregnancy loss and often occur because the fetus is not developing normally. नंबर 12 देखते हैं यहाँ पर. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में टू समराइज द टॉपिक, टाइम 1 मिनट का होगा. समराइजेशन में टुडे वी लर्न अबाउट द अबॉर्शन एंड द फॉलोइंग हेडिंग्स. डेफिनेशन, कॉजेज एंड सिम्टम्स, टाइप्स एंड मैनेजमेंट, मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग. तो हमको ये समराइज करना है. समराइजेशन के बाद हम यहाँ पर बिब्लियोग्राफ लिखेंगे जो रिलेटेड कंटेंट हमने यहाँ लिखा है. तो इस तरह से हम लेसन प्लान को यहाँ कंप्लीट करेंगे. तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने अबॉर्शन का लेसन प्लान लर्न किया. आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe my YouTube channel for more nursing care plan, case study, lesson plan, health talk, drug study and many other nursing related material. So please friends subscribe my YouTube channel and press bell icon also. Thank you.